दोबारा in this chapter we will learn about triangles, है ना? No, the very first triangle is equilateral triangle. The sides of equilateral triangles are equal, as well as the angle, each angle is equal to each other angle inside the triangle, and the total value, or when you sum all the angles inside a triangle, is equal to what? Is equal to 180 degree. मीन्स जितने भी एंगल्स होंगे हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो उन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 180 डिग्री. क्लियर? Yes. Okay, now isosceles triangle. Second triangle is isosceles triangle. Now tell me, in this triangle you can only see the line, that line here, and this is the line, but you cannot see this line here. Clear? Now what does it mean? It means that this side is equal to this side, but not to this side. Clear? So in isosceles triangle we have only two equal sides, while the third side will be, it won't be equal to the any other of the two sides. ठीक शो? पदे ट्रायंगल के वैसे भी मुंसरा भाई सिर्फ दो साइड्स बराबर भी, तो रदल तक मुंसरा सोना साइड्स बराबर इक्वल 3. पदे के मुंसरा टू साइड्स इक्वल भी और थर्ड साइड इक्वल नहीं. दे के मुंसरा 3 वाला एंगल्स चू आगा इक्वल. ओह और पदे के चुम के दो साइड्स जो दे के सोना एंगल्स इक्वल भी, two angles का मुंसरा इक्वल भी, और थर्ड बचे दे आगा बा डिफरेंट भी. ठीक शो? तो फर्ज का मुंसरा दा एंगल दलते की भी, दलते के सोना एंगल भी आगा हम एंगल बदलते के भी. ठीक था? और द्वारा बा 8 को और द 180 नवे माइनस को मुंसरा बदा एंगल राशि. कोई शे? Yes. हाँ, द्रेम ट्रायंगल मुंसरा दे स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल दा चिदागे हर साइड डबल साइड न सवी different. Kada 5v, no, let's suppose da 4v, da bache de 6v. Yo side हम both sides सरा equal नवी का फर्क da 5v. No, da side बस हम रवि 5. ठीक शो? बदल तक बचे दे ना टूल angles चेसवी अब यो बोलना different भी है. Sorry, दल तक बटूल शेपी. So again the total angle inside the triangle will be equal to 180 degree. कोई शे? Yes. हाँ. Yes. उस मुंसरा बयानू चीज़े acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. चिकल मुंसरा यो triangle ही और आगे के यो angle हम the 90 degree ना सेवाने भी, मतलब all angles सीधे मुंसरा सभी the 90 ना कम भी, less than 90 degree भी. ठीक शो? नो आगे triangle तो मुंसो आयु acute दासी उगो रखना दाबर टोटल दासी बा 90 भी करना जी. नो दादा 90 ना कम है शो दा साइड. ठीक था? उस दे साइड तो उगो रहे तो फर्ज का दल तक जो सॉरी दल तक जो दासी लाइन जोड़ो में it is also still less than 90 degree. दाबर 90 degree भी करना. ठीक शो करना? Same is for the case here. तो दल तक यो एंगल जोड़ो नो दल तब हमारा सर 90 degree तुम जुड़ेगी जी. no, still this angle is lesser than 90 degree. ठीक ना? no check all triangle चाहे कि हम सरा angles चले 3 acute angles भी means each angle हम सरा सभी अगर 90 ना कम है भैया. हाँ आगे दबा acute angle triangle वायु उस आगा triangle चे आगे के हम सरा यो angle the 90 बराबर है भी ना आगे तो हम कसवा यू right angle triangle दा यो angle चे दा हम सरा 90 दा और दानोर बसे भी दानोर बगोरे 90 न कम भी. ठीक था? पदे पूछ वे ना? Yes.
ارسلان د خپل مایک ته کولو کنه بیا به تم پکې چې د ریسپانس را کول شي دا دلان میوټ So mute दे. Arsalan mute दे. हाल Yes. चल अगला जोड़े चल रहा है आप उसको चल अनम्यूट बोलो। कर दो. बस जन शम को लेगा बकरी हाँ उस नेक्स्ट दे मुंग सरा obtuse angle triangle देखिए भाई यो एंगल मुंग सरा द 90 ना सेवा आवी ठीक शो नो देखिए दा यो एंगल चिका मदा दा मुंग सरा द 90 ना सदा सेवा दा एंगल ठीक दा और दा नो रेटोले बदा 90 ना लेस ठीक शो हावर ट्रायंगल चाहिए कि यो एंगल मुंग सरा द 90 ना सेवा वी ग्रेटर वी नो अगर तो मुंग कम यो ट्रायंगल वायु obtuse angle triangle तो देवाने कोई शेटुल okay thinking time how are the 6 types of triangle in a table related to one another for example can an obtuse angle triangle be an equilateral triangle can it be no because the angles are different for an equilateral triangle we want all the angles to be equal to each other but in a obtuse angle triangle one angle is greater than 90 degree and two angles are less than 90 degree so means these angles are not equal to this angle so that's why this equilateral triangle an obtuse angle triangle can never be an equilateral triangle ठीक शो sorry the relationship among them are illustrated obtuse angle triangle see the what type of triangle do A B C and D represent recap the angle sum of a triangle the total angle inside a triangle is 180 degree ठीक शो बदल तक उसको फर्ज के मुंगा यो दासे लाइन ड्रा को लगदा P क्यों चे कम लाइन दे this the total angle here was she that total angle was she hello 180. Yes. 180 degree yeah then the total angle 180 degree she now if you want to find this angle or this angle we need to subtract the two angles from 180 degree so we will get the Yes. ठीक शो okay now we can also find the angle here clear how because we know the angle here so 180 minus this angle it will give you this angle ठीक शो दामुंगा last chapter क्यों हाँ म्हणजे दा angle दा the melotion दा total angle was some rishi दा बता दसिशी opposite angle no opposite angle value ba same shi ता सर ba कम values राशि मुंग सर ba यो value दा राशि और यो value बता राशि और चिता find तो no the 180 ना बे minus ठीक था Yes. okay now draw a line PQ that is parallel to AB which passes through C no munga da PQ line already draw kade de angle BAC is equal to angle ACP angle BAC equals to angle ACP how because these two are alternate angles these two angles are alternate angles and also these two angles are alternate angles होई गया ना No. और एग्जाम दादले that's to be bothered let's suppose you da line show अब देखिए यो line da show और बल line हाँ da line show ठीक था दा सकते उस मत दो है छे दा एंगल और दा एंगल बराबर ही Opposite भैया बराबर भी. हाँ दादा तब अल्टरनेट एंगल कम ही दा भाई Yes. दादा अल्टरनेट एंगल बा दायोशी और दादा ऑपोजिट एंगल वसुशी दायोशी
Clear? Yes. No, red के चिकम angles इदामुं सर equal शु. ठीक शु कना. उस next. यो बल जो दे किदा से. ठीक है ना? उस color green वा. उस तल तमातु है चिद. दा angle चिदे. दब अमुं सर alternate angle कम योगी. दा यो बशी कना. Yes. और दा opposite angle शु. दा यो शु. ये दा वाला. शान. दा opposite angle दा शु. नो green के चिकम angle शु. और यो बल equal शु कना. Yes. दा green angle. दा angle ना दे. दे कना दे. द्वाण उस यो शान दी कना दे. है. हाँ. ठीक शो. This angle is equal to this angle कना. Yes. And same this angle is equal to this angle. So both are green. So the value and here both are blue. So the angle here is equal to the angle here. ठीक शो. Because Yes. da you alternate angle शो. यो da alternate angle शो. ठीक दा. In this case यो मुंग सर da angle शो. Color वो change. Da angle शो. यो da angle शो. No पदी case के मुंग सर यो da angle दे. यो da angle दे. No da angle बराबर शुदा the angle. Clear? Yes. And if you want to find this angle, subtract this angle from 180 degree and this angle from 180 degree. So, no, in short, da humunga sirap se full understanding da paru. Chikkal amung sira da angle da yoshu da x is x. ठीक शो. और da amung sira y de. No da amung sira y de kana. Yes. दल तक एक फरस कमा सर यो z angle दे. ना बस सको. 180. minus ना 180 minus x minus y हाँ ना. तो equals to 180 से हम z. ये माइनस करेंगे ये सारे तो फिर हमें z का पता चल जाएगा. Exactly. ठीक शो. So we can say that if we want to find the angle here, so we simply subtract these angles from 180 degree and we will get the corresponding new value. ठीक शो. So the sum of all these angles are equal to 180 degree. पदे पूछे? Yes. Sir. Sir. Yes sir. सर आपसे बात करनी है. सर टॉपिक हाँ. के हवाले से नहीं है और है. हाँ. Okay. Write example number 1. Now we have given two angles. We need to find this angle A. Clear? So we know that the total angle inside is 180 degree. So to find angle A, we need to subtract this 80 degree from 6 and 65 degree from 180 degree. So you will get the answer for A. So first of all, tell me which type of triangle is it? Acute angle triangle, right angle triangle, or obtuse angle triangle? Acute. Yeah, because all the angles are less than what? 19. Yes, so solution will be A. First of all, 180 minus 80 degree minus 65 equals to A. So it is 100 minus 60 is 40, 35. So A equals to 35 degree. ठीक शो. This is your solution. Clear? Yes. Okay. Now practice now. Let's do these questions. So what is the angle here? Tell me. Right angle. Right angle. So what is the angle? What is the value of this angle? 90. 90. So now we have two angles. So to find this angle A, 180 minus 90 minus 65 equals to A. So A equals to Yarhamkumullah 25 degree. Okay? Get it? Yeah. You understand my point? Yes, sir. Okay. Now we need to find the angle here. So what type of triangle is it? What type of triangle is it? It's right angle triangle. Equivalent है sir. Equivalent, yes sir. No. Equivalent नहीं है. वो second जो था. वो second वाला जो था. Isosceles तक क्या था? Isosceles. Isosceles.
हाँ isosceles, तो हमने उसमें पढ़ा कि दो एंगल उसमें इक्वल होंगे. So if this is angle B, so this is also angle B. Clear? Yes, sir. So we will write 180 equals to the sum of all angles. So B plus B plus 52. Clear? So 180 Yes, minus 52 equals to 2B. So 180 minus 50 is 130, and 130 minus 2 is 128 equals to 2B. So 128 divided by 2 equals to B. So it is 64. B equals to 64, and that is your answer. Clear? yes, sir. Very good, Shabash. Now take a screenshot, Shabash, and I want you to solve these questions by your own in your notebook. And when you do it, take pictures and share it with me in the group. Clear?